Hi, good day. I'm Sandeep, and you are watching the Indian Weekender. Today is 26th of January 2022, India's Republic Day. I congratulate you all on behalf of Indian Weekender team. This is a very important day for not only people of India, but for more than 1.25 billion diaspora people of India who are living all around the world. In that respect, we here in New Zealand, we have been celebrating this festival with great pomp and show throughout New Zealand from top to bottom every year. However, unfortunately, right now New Zealand is in red traffic light system which restrict the level of gatherings, and that's why many events has to be cancelled. And in that light, many of the India's Republic Day celebrations has to be cancelled. So what we have done today is, we are going to speak to a very important person who is normally in charge of leading those celebrations about India's Republic Day, along with the High Commissioner of India in Wellington, Hon Consul of India, Mr. Bhav Dhillon. He's a very busy man to catch, but today we have been extremely lucky. Let's go and speak to him. Hello, good day sir, how are you today? Hi Sandeep, how are you? I'm very good, thanks sir. First of all, many congratulations for Republic Day. आपको भी, सबको भी, सब भारतीय मूल के लोगों को भी। बिल्कुल सर, इससे पहले कि मैं आपको एक सवाल पूछूं, पहला मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ न्यूजीलैंड में तरह तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं हमारे रिपब्लिक डे पे, लेकिन एक इवेंट बहुत ही लोगों के दिलों में खास है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में इतनी खास जगह बनाई है, और मैं आपको कारण ही बताऊंगा। वो होता ये है कि 26 जनवरी को सुबह सुबह 7:30 बजे एक खास जगह पे एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है। और मैं बता दूं, वो सेलिब्रेशन होता है हमारे ऑनरी काउंसिल मिस्टर भाव ढिलन के घर पे। वहाँ पे सारी कम्युनिटी इकट्ठा होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, what has been a trend, actually it has a very fashionable trend now, that Mr. Dhillon, he organizes a breakfast to greet all his guests, and in the spirit of India, every year he chooses one particular region of India, Indian culture, and the food is reflective of that region and that culture. And this time it was supposed to be a South Indian buffet. So that event has created a big place in the community of community leaders here in Indian diaspora. उस इवेंट का बड़ा वेट होता है और लोग बड़े शिद्दत से उस इवेंट की तरफ देखते हैं, क्योंकि उसमें हमें भारत के विभिन्न प्रांतों के खाने को मिलता है और भारत के ग्रोथ स्टोरी को शेयर करने का मौका मिलता है. तो सर, इट हैज़ बीन ए बिग लॉस फॉर लॉट ऑफ अस, and I can understand that you have held this decision of postponing or cancelling it till very late. So can you tell us why exactly and what exactly you were trying to do? You were trying to hold the event, or? So as you rightly said, it's usually badged as a breakfast with diaspora leaders. तो इसमें हमारे कम से कम अराउंड हर प्रांत से लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बीयरर्स होते हैं, और बहुत ही एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है उस दिन, जो सारे हमारे डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करता है. और 26 जनवरी इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड जो हम बोलते हैं इवेंट है. और आपको जैसे पता है, कोविड की ये ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, और न्यूजीलैंड में भी 2 दिन पहले ही ऑरेंज से रेड पे आ गए हैं. और इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन. जैसे आपको पता है कि कुछ हमारे कम्युनिटी के इवेंट्स भी थे जो पीछे, जिसमें कुछ हमारे भारतीय मूल के लोग भी इस समय आइसोलेट कर रहे हैं, हमें ऑफिशियली अनऑफिशियली पता लग जाता है. सो वो सारा कुछ देखते हुए, सो विद अ हैवी हार्ट वी हैड टू टेक दिस डिसीजन कि इसको हम कैंसिल कर दें, बिकॉज सबकी जो सेफ्टी और सेहत वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और एज यू राइटली से, एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू दैट, बट जो health was more important, so we decided not to do that. In the same way, हमारे जो वेलिंगटन में एक काफ़ी बड़ी रिसेप्शन थी, इससे 5 गुना बड़ी थी, जिसमें अराउंड 500 लोगों ने आज शाम को आना था. बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट के भी काफ़ी लोग थे. Just to add on that, what sir is saying, जो न्यूजीलैंड में जो 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशंस की शुरुआत होती है,
वो सुबह आपके रेसिडेंस में जो ब्रेकफास्ट विद इंडियन डायस्पोरा इवेंट से शुरू होती है और शाम को जो आप रिसेप्शन बता रहे हैं हाई कमिश्नर, वो बड़ा फॉर्मल इवेंट होता है, जी। वो दैट्स अ फॉर्मल रिसेप्शन जी। वेयर यू नो द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड, दैट इज फ्रंटेड बाय हिज एक्सीलेंसी द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो इस समय मिस्टर मुक्तेश परदेशी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी कैंसल करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस कोविड के कारण। और वहाँ भी सुबह एक उन्होंने उसको स्केल डाउन करके एक छोटा इवेंट वहाँ भी करा है वेलिंगटन में, लेकिन दोनों जगह यस यू आर राइट, वी हैड टू कैंसल द बिग इवेंट्स. Surely, I do understand that it is definitely a big loss for our broader Indian community and for the rest of New Zealand as well, because these are the opportunities when we, I would say, send out the key messages about Indian culture, about India's growth story. But I would say personally that it has been a big gain for us, because in last 5 years of your role, this is probably the first time that we have been able to get hold of you. I don't know, you have been exceptionally busy man. So thank you very much for sharing that time, and we would like to maximize what we can achieve. तो सबसे पहले 26 जनवरी की स्पिरिट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे अच्छी यादें क्या रही हैं भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने की? सो इंडिया में 26 जनवरी की, जैसे सबको पता, काफ़ी अपनी एक अपनी जगह है, अपनी पहचान है। और उस दिन हमारी जो आर्मी माइट सारी दिखाई जाती है, परेड होती है हर जगह, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, स्कूलों में भी। तो मैंने भी इसी सब एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ और वो सब यादें हैं। एंड व्हेन आई ग्रू अप, तो फिर कुछ हाइलाइट्स हैं मेरी अपनी ज़िंदगी के 26 जनवरी के आसपास, जहाँ मेरे को यू नो अ कपल ऑफ टाइम्स आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ being a recipient of some awards. Yes. One of them was the प्रवासी भारतीय सम्मान by the president. So वो जो है प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। Congratulations once again. Yes, so that was in 2019. Yeah, thank you. और so ऐसी यादें बस अब जुड़ती जाती हैं। और अब यहाँ जब हम डायस्पोरा को इकट्ठा करके फंक्शन करते हैं, जैसे अब घर में हर साल हम कोई ना कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो ये भी यू नो इट्स ऑल एडिंग टू द बैंक बैलेंस ऑफ आवर यादें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। अब चूंकि आपने शुरू किया, ख़त्म किया अपने इस रोल पे अपनी यादों को, तो मैं इसी रोल में फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन दैट यू प्ले एन exceptionally hands-on role in this role of Consulate of India, and probably I will be asking many more questions because there would be a lot of curiosity around. But first thing first, आज की डेट में आपका की मैसेज क्या है रिपब्लिक डे में? भारत की स्टोरी के बारे में आपसे हम पूछें, भारत की राइजिंग भारत की स्टोरी के बारे में पूछें, तो व्हाट विल बी योर की मैसेजेस ऑन दिस ओकेजन? की मैसेज इस समय आज के दिन में कोई भी हम बात करें तो कोविड के बिना वो बात अधूरी है। द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट कोविड एंड सो इज इंडिया। सो द इंडिया स्टोरी ऑल्सो, वी कांट टॉक अबाउट द करंट स्टोरी विदाउट कोविड। तो एक हमारा जो बड़ी मेन इंडिया ने अचीव करा है, जो हम जिसको वैक्सीन 𝗦𝗲 बोलते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ने, किसी ने एक बनाई है वैक्सीन, किसी ने एक भी नहीं बनाई। तो भारत वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जिसने 2 वैक्सीन्स अपनी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई है। और इसको अपने कंट्री में तो उन्होंने काफ़ी यू नो जो डोजेज़ एडमिनिस्टर करी हैं, उन्होंने ये दुनिया में भी जहाँ नीड है टू बैलेंस, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ 5000 ईयर ओल्ड कल्चर जिसमें इट्स नॉट ऑल अबाउट अस, इट्स अबाउट एवरीवन, जिसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो वी आर अ फैमिली। सो कोविड स्टोरी में इंडिया ने अपनी पोजीशन इन द वर्ल्ड सीमेंट करी है इस इशू को लेके। और जहाँ इसके साथ साथ आ जाता है कि इकोनॉमी का क्या हो रहा है, ठीक है, देयर वाज अ स्लाइट bump when COVID started in India. Of course it was new territory, किसी को पता नहीं था क्या है, सब कंट्रीज के साथ हुआ है। लेकिन the way India has bounced back, and I would say कि facts बोलते हैं। तो आप अगर देखिए जो FDI है, जो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज है, that's all about the confidence of the big major investors of the world. Right. So that confidence is at the very zenith of it, because India is now at the very top of the world with the foreign direct investments. Or India, the way India has bounced back from COVID is also a story which the other countries are learning, and the way India has dealt with it
And Sure. of course, there were some, tough moments during Definitely. it. I was going to come and which talk is about all those. part and parcel of it. Sure. No, that's a really great message, I would say. Very well put as well. But as you have rightly concluded that there were some tough moments as well. So I would like to talk more about those tough moments and see what are your thoughts on that. But before that, I must say that from what we have observed, you in action here, in heading this consulate over here, which is you have been doing a very hands-on role. So what has been observed that you have brought in a new vision, maybe along with the High Commission's office in India, in Wellington as well, where you have been trying to achieve a very, I would say, very tough goal, the goal of keeping different segments of Indian diaspora united, which is, I would say, I would not say it a utopia, but it is definitely a challenging goal. Generally, diplomats, they try to keep away from that exceptionally challenging goal. It is meant for more strong-hearted, those who have got that vision. And linking with what you have been saying and talking about India, इंडिया हमारा 1.3 बिलियन लोगों का देश है, बहुत मुद्दे हैं, कुछ टफ मुद्दे भी होते हैं. तो जब इंडिया में हमारा टफ मुद्दा उठता है कोई, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कोविड से रिलेटेड क्यों नहीं हो, सो पूरे विश्व में डायस्पोरा में रिफ्लेक्ट होता है. और वी सी अ ह्यूज टेंशन विद इन आवर डायस्पोरा ग्रुप्स, एंड न्यूजीलैंड हैज़ नॉट बीन एनी डिफरेंट. But what we have noted is that you bring forward this exceptionally new vision of trying to keep them united and together, even against all the challenges. So, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि is that correct? B, how difficult or how easy you find it to try to achieve that? So इसके कई questions हैं. Again, I will not take ownership or credit for this, in this unification of our. तो इसको भी मैं, जैसे मैंने बोला, हमारी एक 5000 साल की संस्कृति है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो वो जैसे वो हमारे अंदर है, हमने उसको सिर्फ अनलॉक करना है. बाहरले देशों में आके इंडिया में पिछले हजारों सालों से चल रही है. और जिसको आई ऑलवेज ऑल्सो से दैट जो मल्टी कल्चरलिज्म है या मल्टीलेटरल थॉट प्रोसेस है, वो भी इंडिया में बहुत देर से बड़े पॉजिटिवली चल रहा है. और जैसे आपको लगता है टेंशन हमारी कम्युनिटी में किसी भी मुद्दे को लेके, एक तो नंबर्स ज़्यादा है ग्लोबली, 30 to 50 मिलियन हमारा डायस्पोरा, आम कंट्रीज, मिड साइज कंट्री जितना वो है. सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इट्स ओन. प्लस अगेन ये हमारी पुरानी जो डेमोक्रेटिक संस्कृति है, उससे आता है कि हम बड़ा ही रोबस्टली इश्यूज को डिस्कस करते हैं आपस में भी, विद इन कम्युनिटीज ऑल्सो. व्हेन यू ट्राई एंड कंपेयर इट विद सम अदर एशियन अपकमिंग सुपर पावर्स व्हिच कंपेयर, वहाँ बड़ा एक यूनिलैटरल रहता है. और जो डायस्पोरा में इतना उनको फ्रीडम ही नहीं होती कि वो टफ इश्यूज थ्रेडबेयर डिस्कस कर सकें. तो यहाँ ठीक है. और हम भारतीय लोग हैं भी एक बड़े इमोशनल लोग हैं. तो हम दिल से काम करते हैं. तो जब किसी इश्यूज पे भी हमें कुछ लोग किसी इशू पे ज़्यादा वो हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, फिर आपस में रोबस्ट होता है. लेकिन इन द एंड वी आर ऑल टुगेदर, एंड दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ देम. यस, वी ऑल हैव आवर ओन लाइकिंग, चॉइसेस. दिस इज व्हाट लिविंग इज ऑल अबाउट. दिस इज व्हाट्स लाइफ. जीना इसी का नाम है. और लेकिन उसके बाद वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फैमिली. इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. हमारी फैमिली में भी सुबह से शाम तक कई दफ़ा हमारी वो होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, बट देन वी काइंड ऑफ फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आवर डायस्पोरा. और क्योंकि बड़ा है, नंबर्स हैं, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आती है. बिल्कुल, थोड़ा नहीं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है. और आवाज़ कई दिशाओं से आती है. हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, और हमारे जो ग्रुप्स में हैं, जो हमारी मीटिंग्स हैं, चाहे अभी रिसेंटली जो हमारा ये किसान आंदोलन वाला इशू था, इसमें भी बहुत इमोशंस देवर फ्लोइंग अराउंड ऑल द प्लेसेस. इसमें मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि लोगों को ना एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा डायस्पोरा रिलेशनशिप है, इंटर डायस्पोरा रिलेशनशिप और इंट्रा डायस्पोरा विद द कंट्री, विद द होम कंट्री, वो भी अगर नोबडी विल बी एबल टू चैलेंज मी ऑन दैट कि 2014 ऑनवर्ड्स
इसमें भी स्टेप चेंज आया. जी. The way India looked at its diaspora Sure. has really moved since 2014. Sure. And there is a high level of engagement. Definitely. और जो यहीं नहीं रुकता, जो हमारे we start talking about people of Indian origin, चाहे आपके पास पासपोर्ट जिस मर्जी कलर का हो, as our Prime Minister once said, and that is still stuck with me. So he said, our connection with our diaspora is not through the color of their passport. Sure. It is through the color of the blood. Definitely. तो उसके कारण जो डायस्पोरा एनर्जाइज हो गया बिल्कुल 2014 के बाद. Yes, just to give a little bit more context to our viewers, what it means is that Indian diaspora is not just about the recent migrants from India who have come to live over here, say in past few decades or something. It is about connecting with people who have left India's shores maybe around 100 years ago, and today here in New Zealand, talking about New Zealand's context, they have come here through different routes. हमारे पास फिजी इंडियन डायस्पोरा है जिसने भारत में आखिरी जो उनका शिप गया था 1920s में गया था. हमारे पास साउथ अफ्रीकन डायस्पोरा है, हमारे पास सेंट्रल मलेशियन साउथ ईस्ट एशियन डायस्पोरा है. और पिछले कुछ वर्षों में अगेन आई विल नॉट ट्राई टू गिव क्रेडिट टू यू ओनली, इट हैज़ बीन अ टीम एफर्ट आई वुड से अंडर डिफरेंट हाई कमिश्नर्स, एंड यू हैव डेफिनेटली टेकन अ गुड लीड इन दैट, इन ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल दोज. यस और जब ये जैसे ये दिल्ली से चेंज हुआ, हाउ वी engage with the diaspora, how we look at the diaspora, तो जब दिल्ली से ये चेंज हुआ तो हमारे जैसे हाई कमिश्नर्स भी इसका सिमिलर लाइन में विजन देते हैं. Right. और मेरा जो रोल है यहाँ के जो हमारे हाई कमिश्नर साहब हैं, उनका जो विजन है, जो हमारे देश का विजन है, उसको हमने इन अ पॉजिटिव मैनर इस अपने एरिया में प्रफुल्लित करना है, प्रमोट करना है, प्रमाणित करना है. तो उसी लाइन में हम चलते हैं. बिल्कुल. तो क्योंकि आपने अपने रोल की बात करी तो मैं थोड़ा सा इस रोल के बारे में और जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन लास्ट फ्यू years since this office of Consulate of India came up here in Auckland under Mr. Dhillon. What we have seen is that this office has been really going above and beyond in trying to connect with people, and mostly people who are in distress. So it is always an emotional thing, but I think your office has definitely taken a lead in that space. तो थोड़ा सा हमें बताइए आप कि आपका ऑफिस कैसे कैसे काम करता रहा है, and then I will come back and ask you a couple of more questions on that. सबसे पहले तो this is, I would say the greatest honor of my life, which I can say. अब आगे भी I don't think there can be any other honor bigger than this. जो मैं 12,000 kilometers दूर आके भी I had the good fortune to represent my country, represent my people here. So thanks to our governments, our high commissioners who had the vision to bestow that honor upon me. So coming to the role, तो रोल तो ये इतना वाइड है और ये सारा हमारा जो विजन है, वर्क है, ये हमारा वेलिंगटन हाई कमीशन से चलता है. उनकी मुझे एवरी डे एवरी मिनट गाइडेंस और सपोर्ट रहती है. मैं तो यहाँ आई एम अ वन मैन शो, वहाँ सारा हमारा ऑफिस है. और हमारा जो डायस्पोरा है अबाउट 250,000 ग्रोइंग टू 300,000, उसमें इश्यूज हर किस्म के आते हैं, स्टूडेंट्स के भी आते हैं. अब जैसे कोरोना के काल में भी आवर हाई कमिश्नर टुक द लीड एंड वी ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ वंदे भारत फ्लाइट्स, repatriation flights. We live in a real world. We have to deal with drownings, we have to deal with accidents, we have to deal with certain other unnatural kind of deaths. So it becomes quite a moving, emotionally charged as well, is it right? Yes, क्योंकि we are dealing with real people, we are dealing with real lives, and with 250,000 कुछ ना कुछ ऐसा always on the table रहता है, जिसके लिए मुझे I have to really keep my mind also quite balanced. Because we all are human beings. Definitely. And sometimes dealing with such stress and distress impacts you also. Definitely it does. And I would like to add on that, from what we have observed
in last few years. Since this is our first opportunity to speak to you in last few years, so I'm just taking this privilege to tell our viewers that, you know, many times you and your office go over and beyond to help those people from our diaspora who are in distress, ranging from as trivial issue of arranging an emergency travel arrangement to as serious and as heartbreaking moments of death and body repatriation. So what we have observed is, and I would like to clarify from you, that probably we have seen you working round the clock. There is no time limit when somebody can knock at your office or call you personally or your team members to basically seek that help. So we would like to know how many hours you dedicate to this role. And then, yes, we would like to know that. इसका तो कोई फिक्स नहीं है. सो यूजुअली एक मेरा जो ऑफिस का टाइम रहता है वो मैं अबाउट 2 बजे के आसपास अपने कॉन्सुलेट ऑफिस में आता हूँ. तो वहाँ 5 बज जाए, 6 बज जाए, 7 बज जाए, आई डोंट नो. तो अगर उसको एवरेज 4 घंटे भी लो, सो अबाउट 20 एक घंटे तो वो है. लेकिन व्हेन यू ऐड द अदर थिंग्स अराउंड इट, द वीकेंड्स, सो आई वुड से एवरेज अगर मैं साल का एवरेज करूँगा तो 30 घंटे हफ्ते के मेरे को इस रोल में कम से कम लगाना ही पड़ते हैं. Well, which is 30 घंटे हफ्ते के, तो it's kind of a full-time role here in New Zealand. Full-time role is considered for 30 odd hours, and this is when, from what we know, is that there is no financial reward for this role, A, and B, you are a very successful and a leading business leader here in New Zealand as well, who has accompanied Prime Minister of New Zealand back to India on their 2 or 3 different visits, if I'm right in my count. And you manage multiple very large-scale businesses as well. So how do you find time out of? तो इनमें से आपका मेन काम कौन सा है, पार्ट टाइम काम कौन सा है? ये तो मेरे को भी नहीं पता कि मेन कौन सा है, पार्ट टाइम कौन सा है. बट गॉड हैज़ बीन काइंड, यस, गॉड हैज़ बीन काइंड टू एनेबल मी टू गिव majority of my time to the community. And again, God has been, I would just stop at that God has been kind, that He's helped me, supported me to give this kind of time, effort, and emotions to the community. Of course, I would not have been able to do it unless I had the full backing and support of the High Commissioner of India in Wellington, his staff. और उनके बिना तो I would not be able to do justice to the role. So we are all a big team. High Commissioner is our leader, and we all work together to deliver positive outcomes for our community. Great, well said. Now, your response takes me or compels me to go back and have a quick relook of last 5 years of your leadership role that you have been doing in the community. And one prominent observation is that in last 4 or 5 odd years, you have brought together different Indian ethnic community organizations together under one broad name of Indian diaspora group of things, which is not an easy task. From what we know, that we all are humans, and bringing them together under one vision, it is always challenging. So we would like to know a little bit more about that effort and how successful it has been, and what future do you see from that effort? See, one, I'll answer the last part. It has been highly successful. So we are now in our 5th year of our the informal Auckland diaspora group, जिसमें I don't think there is any organization which is not part of it. So right from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Bengal, we have all representation. और ये जैसे मैंने पहले, आई विल रिपीट इट, कि जो हमारा ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडिया स्टोरी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और इसका एक मैंने जो इसका मॉडल दे के उनको एम्पावर करा है. सो आई डू नॉट, जो इसका अगर मेरे को आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द one thing which has brought about success is that I do not play the boss with the community group. So I've brought them together, and I always encourage them to work together and in their own spaces.
or this does not say that we put everything together. We say we really respect every community, every organization's own individuality, their own regional cultures, their own food, their own way of dressing, but then we are also together as Indians. और एक सवाल आपका, यस इसमें चैलेंजेस भी बहुत मेरे को आए हैं, आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनको ऐसे लगता है कि इकट्ठा होने से उनको उनकी दे लूज देयर टफ, और दे हैव सम स्लाइट मायोपिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इट, और दे वांट टू होल्ड ऑन and they want to divide people on regions or language or this or that, but वो उनकी सोच है, और जो majority सोच है वो है कि we are all together, we are all Indians and we work together, and I can say that the group is working exceptionally well. So उसमें absolutely zero, बड़ा मुश्किल है जो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि ज़ीरो फिक्शन है और सब इकट्ठा काम करते हैं, और एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ ईच अदर. और उसका एक ये भी हो गया, पहले क्या होता था कि अगर कोई तमिल वालों का इवेंट होता था तो वो उनका अलग होता था, गुजरात वाले अपना अलग करते थे, वो उनके नहीं जाते थे, वो उनके नहीं जाते थे. अब जब एक ग्रुप बन के वहाँ सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस हो गए, अब नाउ व्हेन आई गो टू अ फंक्शन एंड आई रियली इंजॉय द फैक्ट that गुजराती फंक्शन में तमिल वाले भी होंगे, तेलुगु भी होंगे, नॉर्थ इंडिया से भी होंगे, बिहार से भी होंगे, so we are all together. So people have really enjoyed this camaraderie. Surely, and it prompts me to say that आप भारत के बाहर एक बड़ा छोटा सा भारत क्रिएट कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि सबको एक साथ लाया जा सके, एक साथ रह सके. हो सकता है कि that could be a good example for our other diaspora communities all around the world. And in line of your response, I'm also intrigued to ask one more thing. If I have to ask one of the most challenging issues that you have dealt in last 1 year or maybe 2 years, because we have been into this COVID for the last 2 years and we have also seen many big issues in the last 2 years affecting back in India. So अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से, आपकी नज़रों में दो सबसे चैलेंजिंग इश्यूज जिनसे कम्युनिटीज़ को इकट्ठा रखने में जो आपको डील करना पड़ा पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में, वो कौन से इश्यूज हैं? कम्युनिटी को इकट्ठा रखने में तो मेरे को कोई चैलेंज नहीं है. ठीक है, सम पीपल विद, एज आई सेड, विद सम डिग्री ऑफ मायोपिक विजन, बट उनको जो मेजॉरिटी डजंट वांट टू प्रमोट दैट लाइन ऑफ थॉट. सो कम्युनिटी को इकट्ठा रखने में कोई चैलेंज नहीं रहा. लेकिन जो अगर आप ये पूछो कि इश्यूज क्या पिछले साल 2 साल में, तो अगेन एंड आई माइट be slightly politically incorrect here, because these are again linked with COVID and Corona. तो एक तो जो हमारी split families है because of border closures, वो जब मेरे पास आते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, so that is very deep sense of helplessness which does not go down or sit well with me. और इसी में जब हमारे डायस्पोरा का बिकॉज ऑफ बॉर्डर क्लोजर्स, किसी का कोई परिवार वाला इंडिया में अनवेल है, somebody passed away, they can't move because of MIQ and issues. So these things are really causing me unrest in my mind. Definitely. Completely agree with that, and that's a little bit somber in mood. So probably I've already taken, I think, a good amount of time, given that you have been such a busy man that we have never been successful in the last 5 years to get hold of you. So I would like to quickly conclude this and slightly shift our mood from a little bit of pessimism and somber to more optimism. If I have to ask you one final message to our TV Indian diaspora, to our Indian diaspora all around the world on this occasion of 73rd Republic Day of India, what will be your key message? Key message on Republic Day is all about what India is all about, which is we are a country of many different religions. We are a country of many different ethnicities. So my message is again in the same line, unity in diversity.
Plus, especially for the diaspora, when we are living in countries far away from our motherland, so every member of the diaspora is a true ambassador of their country. So each person of our diaspora is representing the great nation of India. So I just want to, leave this thought with all members of diaspora, that whatever you do in your daily lives, at work, in the public, when you're on holiday, wherever you do, always remember that you represent the great nation of India, and the reputation of India is riding on your shoulders, and your reputation also is riding on the shoulders of India. So you are all both very, the reputation of India and your personal reputation is, intertwined and enmeshed. So always remember that and do your best. Make your family proud, make your rider family proud, and make the country proud with whatever you do in your daily lives. Thank you very much, Mr. Dhillon. It was a pleasure talking to you and getting to know in such detail. And hopefully next time we will be more fortunate to be able to speak to you in less than 5 years. We'll try that. Sure. Thank you. Thank you. So that was Mr. Dhillon, Honorary Consul of India, giving his detailed message and sharing insights about his office, what he does and what he do on a regular basis for Indian community here. And on that note, I would like to take your permission and let you go and enjoy the rest of your India's Republic Day. I wish you all the very best and happy India's 73rd Republic Day.